सो गाइस, आज का मेकअप थोड़ा सा डिफरेंट है. सो एज यूजुअल जब मैं मेकअप करती हूँ सो आई ऑलवेज डू फेस मेकअप फर्स्ट एंड देन आई डू eye makeup, but today I'm doing eye makeup first and then I do face makeup. So let's begin start video. And first I'm just taking like Magic Collection Rose Water Hydrating Mist. So ये मैं मिस्ट ले रही हूँ और फेस पे मैं जस्ट लगा रही हूँ, जस्ट फेस को हाइड्रेट रखने के लिए. Starting eye makeup first today. So for that I'm just conceal my eyelid with A1 color correcting palette. So this is the concealer. So ये मैंने लिड पे आई बेस लगा लिया है और अब इसको मैं ब्यूटी ब्लेंडर से मैं अच्छे से ब्लेंड कर लेती हूँ. एंड अब मैं इसको इसके ऊपर मैं लिड के ऊपर लगा रही हूँ. ये मैक का A51 पाउडर है, ट्रूथ एंड लाइट. ये हल्का सा सीमर पाउडर है और ये मैं आईलिड के ऊपर लगा रही हूँ. नाउ मूविंग टू दी आईब्रोज. एंड आईब्रोज के लिए मैं ले रही हूँ ये क्लिनिक का ब्रो सेट. ये लाइट ब्लॉन्ड कलर है, सो मैं इसको एज अ प्राइमर यूज कर रही हूँ. Now I'm taking this Anastasia Beverly Hill, the medium brown color brow powder. So I'm using this one first, hold the eyebrows, and at the front I'm using this light color. If you don't have like this kind of the color palette, so special brow set, so you can use like any dark color eyeshadow as well. Usually like when we wear like apply the powder on eyebrows and like we wear like we wanted to wear longer time, so powder is going to be melt, is going to be disappear. So this technique is really good. Like you can use like any brow pencil or like if you have like any light color or brow primer, and then you apply the powder, so it's going to be stays long lasting. So today I'm using this Manly eyeshadow palette. So today we are doing like a little different eyeshadow eye makeup. So for that first I'm taking orange color. I'm taking inner corner this orange color, then I am taking the red color for my crease, and also then I'm taking outer corner this pink and purple. I'm mixing both two colors and I'm taking at the outer corner. So I'm applying this color like right after below my eyebrows. These colors are really pigmented. It's a matte color, so always take like very small amount of the products and then blend well. So inner corner, inner third, I'm applying this orange color. Now I'm taking red color. That one I'm applying here like inner third to like outer third. And this color you have to apply with very light hand. I'm taking purple and pink color, then mixing the color both. So for the cut crease I'm using this MAC concealer. It's NC20. Sorry, I'm using this brush but there is no name. So it's a flat brush.
So I can see my crease, so I'm just cut directly from there. So easy way, अगर आपको कट क्रीज सीखना है तो आप सबसे पहले ऐसे ही डॉट डॉट कर लीजिए, like that, and then you cut your crease. So we are doing here like half cut crease. So for that, like we don't need to cut like full crease. This is called half cut crease. So when we come here till inner third part, so we have to blend the concealer over here. So now we are starting outer corner first. So for that I'm taking this brush from the Eyes by Design, taking here like purple and pink color. The brush from the Morphe M05. I'm taking a flat brush from MAC 242 SE. I'm taking this yellow color and I'm applying this color here inner corner, and we just have to tap this color. So यहाँ पे इनर कॉर्नर में मैंने लेमन येलो कलर लगाया है. Now I'm using this mustard yellow color. ये जो मैट कलर होते हैं वो बहुत ही पिगमेंटेड होते हैं, सो दिस कलर्स हमें बहुत ही केयरफुली लगाना है आईलिड पे. सो अब ये मैंने लेमन येलो, मस्टर्ड येलो मैंने लगा लिया है, और यहाँ पे मैं लगा रही हूँ ग्रीन कलर, दिस पैरेट ग्रीन कलर. Blending is very important, so when we do makeup, so as you can see I blend all the colors all together. I'm using a little bit black color. Blending this black color with this taper brush. So eye makeup is done now, so liner, mascara and all we do later. So first now I'm doing base. So before that, like I just dust out all these excess. And I'm just cleaning with this makeup cleansing wipes. This is Flawless Primer. First I'm applying corrector now. So corrector I'm using this mustard yellow color. So now I'm blending this corrector with wet beauty blender. I'm taking here to palm. So foundation I'm using here this Artistry. There I'm using again American Beauty. I'm taking the concealer back up to my hand. Now using this brush and applying the concealer.
So I'm applying this concealer all the highest point of my face. इनर कॉर्नर में मैं ब्रश यूज कर रही हूँ. So now I'm applying the baking powder from Avon. Baking powder I'm applying with her wet beauty blender. I'm using this MAC Sculpt and Shape powder. It's A59 Bond Base Emphasize. This is the this is two in one. This is the highlighter and this bronzer. So for the highlighter I'm using this powder first, and I'm applying this powder on my highest point on my face. And this dress I bought from the Amazon. I purchased from the Amazon, and I don't know the price, and there is no name also. Same palette I'm doing contour. So I'm doing also cheekbone, forehead line, and this is very light shade, so that's why I like to use this one. It's not very harsh. And for the nose I'm taking here this small brush. So when I contour my nose, I always blend this contour with my eyeshadow. So today I'm applying the highlighter first, and this highlighter I'm using from the Pink Orchid Studio, and the shade is Lishkara. Here I'm taking this MAC brush 225, and I'm applying this highlighter on my highest point of my cheek. So I applied the highlighter on my highest point of cheek, center of the forehead, top of the brows, center of the nose tip, and chin and cuticle. Blusher I'm using this very neutral blusher. It's a light peach from ELF. So now again we are moving to the eye makeup, taking taper brush again, and this purple and pink color, I'm blending again outer corner. So now on a lower waterline I'm applying this ADS black kajal pencil. This purple color at all over waterline. So brush I'm taking this Eyes by Design. So inner corner and highlighting area I'm using this olive green pigment. From this pigment is from the MAC. I'm applying eyeliner. I'm using Crayon Cake Liner.
the mascara, and mascara I'm using this Clinique mascara. Also I'm applying mascara lower lash as well, and you can see here like I touch my mascara one over here, so I'm not removing right now, just let it dry. ओके सो मैंने फॉल्सेस लगा ली है, एंड ये जो मैंने बोला कि मस्करा के वक्त लग गया था, सो इसको अभी मैं, ये ड्राई हो गया, इसको हमें जब वेट है तभी नहीं निकालना है, सो जब भी ड्राई हो जाए तभी ये निकालना है. सो इट्स गोना बी टू इजी फॉर अस टू रिमूव दैट स्टेन. Okay guys, so makeup is almost done and now just lipstick is left. So for the lipstick I'm using here MAC lip pencil, so it's cream kiss, the name is the lip pencil, and lipstick I'm using Chatterbox. So first I'm defining my lip with the lip pencil. This color is very nice and nude color. I'm done the makeup and I create this look like matte eye shadow के साथ मैंने कलरफुल आईज की है, कट क्रीज आईज है, और बहुत ही अमेजिंग ये आई मेकअप लग रहा है. और आजकल ये बहुत ट्रेंड में है, ये ब्राज़ीलियन मेकअप में भी कहा जाता है, इंडिया में बहुत ट्रेंड है इस मेकअप का. तो गाइज ये आप डेफिनेटली आप ट्राई करिए, अगर आपके पास जो भी कलर है आप उसके साथ प्रैक्टिस करें, तो प्रैक्टिस करने के साथ साथ ये आ ही जाता है. सो आई होप यू लाइक दिस माई टूडेज मेकअप ट्यूटोरियल, एंड अगर आपको ये मेरा मेकअप लुक पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. अगर आपको आपको सेल्फ हेयर स्टाइल लाइक सीखनी है कि हम कैसे हमारे हेयर को स्ट्रेट कर सके, ब्लो ड्राई कर सके, तो उसके लिए भी मेरी दूसरी चैनल है diyabeautyglamabouthair, सो आप उसको भी सब्सक्राइब करें ताकि आपको वहाँ पर भी आपको थोड़ी बहुत हेयर की नॉलेज भी मिल जाए. सो ज़्यादा तो मैंने वहाँ पे नहीं करी हूँ क्योंकि मुझे इतना सेल्फ हेयर स्टाइल का इतना नॉलेज नहीं है. आई एम हेयर स्टाइलिस्ट, बट सेल्फ हेयर स्टाइल मैंने ऑलवेज मेरे हेयर मैंने ओपन ही रखे हैं, सो इतना नॉलेज है नहीं, बट आई ट्राई माई बेस्ट टू शेयर एज मच एज आई नो. तो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और अगर आपको मेरा मेकअप और हेयर का वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो जस्ट डू कंटिन्यू वॉचिंग माई वीडियो, स्टे विथ मी. एंड अगर इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन तो प्लीज़ कमेंट मी बिलो इन कमेंट बॉक्स. अगर आपको कुछ और भी लुक चाहिए तो आप मुझे बताइएगा, सो मैं ट्राई करूँगी वो भी मैं आपके लिए लेकर आऊँ. टिल देन गाइज, बाय, सी या, टेक केयर.